जैसे शगुन मनाए भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए रामाएंगे कभी ढोल बजाए कभी कतार सजाए रामाएंगे कुछ समझ न आए दीप जलाए रामाएंगे सबके आसमान से तारे मान आएंगे रोशनियां तुम्ही पर सकल गाएंगे छोटी साल जोड़ेंगे Have not been seated, there's still some open seats. Please have a seat, we're ready to start the program today. So everybody please have a seat. Can we please clear the area around the tents? Please clear the area around the tents. Please everybody. Today is a very historical moment for all of us. We can see thousands of Hindus have come from all across Ontario today, and some from the States as well, to be a part of this historic moment. Today, you are all going to be a part of history and be a part of unveiling of the biggest Murti of Sri Ramji outside of Bharat. Let's get a big round of applause. So to start today's function, my name is Kushagra Sharma. I am your MC for today's short function. I would like to invite all the Pandajis on stage. Start off with some Vedic chanting. इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनो विर्व्यजेमहि देवहितं यदायुः गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे असो मम अहं जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति गच्छन ससत्यस्वकाः सुभद्रिकां काम्बीरवासिनीं हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्धि देवा यत्रा नशकराजरसन्तनो नाम उत्तरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिगता युर्गन्तो हरिः ॐ जय श्री राम 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 Activities, dances, singing. Behind me, these children, they have prepared a special Hanuman Chalisa, which they will be presenting for all of you. So please encourage them and sing along with them. And please give them a big round of applause.
Let's get another big round of applause. Like I said before, all of these children, they're all students of Hindu Heritage Center. At Hindu Heritage Center, we run cultural classes each week. If you are interested in enrolling your children, please speak to our volunteers at the back tent. And you can have your children enrolled in these classes. It's very important. We have our culture instilled in the next generation, so they keep our culture and tradition alive. श्री राम जी का स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, श्री राम जी का स्वागतम, राम राम जय जय राम, राघव नाम परम सुख धाम, बोलो राम राम जय जय राम, जोर से, राघव नाम परम सुख धाम, राम राम जय जय राम, राघव नाम परम सुख धाम, राम राम जय जय राम, राघव नाम परम सुख धाम, राम राम जय जय राम, राघव नाम परम सुख धाम। मूर्ति का अनावरण हो उससे पहले शुभ कार्यों के प्रपोता भगवान श्री गणेश जी का आवाहन कर लेते हैं नृत्य के द्वारा। प्रस्तुत है गणेश वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
गिड 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 धुन धुन तत्तत्ति जय जगवंदन वक्रतुंडधारी दाता धिगन हरण शुभ करण तगन तगे तुम गिट तुडंग तुडंग दरिगन ते तुडंग तुडंग दरिगन ते तुडंग तुडंग दरिगन ते गणपति गजमुख मंडल नाचत गणपति थे तले गणपति गजमुख मंडल नाचत गणपति थे तले थे तधे थे तधे थे तधे थे आ थे तधे थे तधे थे तधे थे गणपति गजमुख मंडल नाचत गणपति थे तले नाचत गणपति थे तले सिद्धि दो संग में गावे रिद्धि सिद्धि दो संग में गावे हाँ संग में गावे रिद्धि सिद्धि दो संग में गावे भांति भांति के छंद सुनावे भांति भांति के छंद सुनावे राग तान सुन थे तले राग तान सुन थे तले थे तले थे तले थे तले थे आ थे तले थे तले थे तले गणपति गजमुख मंडल नाचत गणपति थे तले नाचत गणपति थे तले थे तले थे तले थे तले थे आ थे तले थे तले थे तले गणपति गजमुख मंडल नाचत गणपति थे तले नाचत गणपति थे तले नाचत गणपति थे तले Big round of applause. Now quickly want to ask our Deputy Chief, Mark Dupont, to come. PO Police has been instrumental in the parades today. Like I mentioned before,
Mississauga Road is impossible to close down. But we spoke to Peel Regional Police, and they said they'll work with us, the councillor. And we had 4 police officers that were paid by the center, and 4 or 5 of them, they were able to allocate through coordination. So big round of applause to Peel Regional Police. Thank you, Kushagar. Namaste, everybody. Good afternoon. Thank you very much for this invite. On behalf of Chief Nishan Diriappa, thank you for inviting us to participate in the Ramrath Yatra and the unveiling of this incredible statue. It means so much to the police to be able to connect with our community. It's aligned with everything that we're trying to do. Community safety is everybody's responsibility, and it's amazing for us to be able to come and join you for such a significant event. Thank you, Kushagar, the Hindu Heritage Center, all the organizing committee for this. Obviously, he gave us some kudos for helping with the traffic, but that would not have been possible if it wasn't for the councillors and so many of our elected officials that supported this event as well, that we're joined by. Have a great afternoon. I'm joined here by our Manager of Community Safety and Wellbeing, Ms. Jazz Dillon, and Constable Snape Patel. If you look around the crowd, you'll see a lot of police officers. Please take the time to get to know them. They're amazing people. They want to learn more about this particular event and our community, develop some relationships with them. I'm sure you'll be very impressed. Exchange phone numbers and tag them on social media if you wish. Thank you very much. So we have a bit of gratitude from our end. I'd like Laj Prashaji to please do the honors. So much. जय श्री राम। जो आपने अभी बच्चों का डांस देखा वो कनेडियन है, म्यूजिक भी कनाडा में बना है। और अब जो डांस आ रहा है, स्वागतम शुभ स्वागतम श्री राम जी का स्वागतम, ये भी कनाडा में बना है। और कल्चर फैलाना हमारा काम है, पनवार फैमिली। हम कोशिश करते हैं अपनी कि कल्चर को जितना हो सके यूथ और बच्चों में फैलाएं। हम धन्यवाद करते हैं शास्त्री जी का कि हमको सिखाने का यहाँ मौका दिया और हमें आज परफॉर्मेंस इस अवसर करने का मौका दिया है। Today, Vaishnavi Panwar, Shavi and Shalvi, Jaden and Adamian, they are born Canadian. Jai Shri Rams.
शुभ स्वागतम श्री राम जी का स्वागतम स्वागतम 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 शुभ स्वागतम श्री राम जी का 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 स्वागतम A big thank you to Panvar Music and Dance Productions. Really want to thank each and every one of our dancers. Like I mentioned before, Panvar Music and Dance run classes here at the Hindu Heritage Center. So if you're interested to learn Kathak for your children or perhaps yourself, please contact our volunteers at the back to have more information. रामाय मंगलम लक्ष्मणाय मंगलम सीता समेत रामचंद्राय मंगलम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, बोले पवन सुत हनुमान की, बोलो उमापति महादेव की, और आप सब श्रद्धालु जनों की, भारतीय संस्कृति की, भारत देश की, कनाडा देश की, भारत माता की, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। इस हिंदू हेरिटेज सेंटर के प्रांगण में बहुत सारे भक्तजन हैं, बहुत सारे हमारे अतिथि हैं। अब किसका स्वागत करें किसका नहीं करें, क्योंकि सभी में सकल राम मैं जानी, सब में राम समाये हो हैं। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम जी का स्वरूप मानते हुए आप सबों को वंदन करता हूँ। जितने हैं पूज्य संतजन इधर विराजमान है, जिसको जहाँ स्थान मिला है आपको कोटि से प्रणाम। और हमारे जितने राजनीतिज्ञ यहाँ आए हैं उन सबको स्वागत धन्यवाद। और जितने विभिन्न संस्थाओं से जितने भी हिंदू धर्म ऑर्गेनाइजेशन हैं टीटीए में, वो सब आए हैं। इसलिए मैं हृदय से उन सब का हिंदू हेरिटेज सेंटर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ कुछ यूएसए से बहुत सारे भक्तजन आए हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जिन लोगों ने वॉलंटियर के लिए कल से दिन रात लगे हुए हैं, और कई लोग 2 सप्ताह से 1 सप्ताह से, सबका धन्यवाद। ढोल ताशा वाले सबका कितने लोग हैं, इसलिए सबके लिए एक बार जरा ताली बजा दी जाए। बिग हैंड फॉर एवरीवन। परमात्मा श्री राम जी हमारे धर्म के विग्रह हैं। अगर किसी को धर्म की व्याख्या समझनी हो और धर्म के ऊपर चलना हो तो राम वत व्यवहर्तव्यम
इसलिए कोई पूछ रहा था अभी, कुछ न्यूज वाले पूछ रहे थे व्हाई यू आर गोइंग टू पुट ए लॉर्ड रामा स्टैच्यू। तो लॉर्ड रामा इज ए कैरेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। और भगवान राम जी, अगर इफ यू वांट टू बी ए नाइस पर्सन ऑन दिस अर्थ and want a nice good couple or good citizen, because Lord Rama think himself to around the world. स्नेहम दयांच सौख्यम च यदि बाजान की आराधनाएं लोकस्या मुंच तो नास्ति में व्यथा। भगवान राम जी कहते हैं यदि लोक प्रजा के लिए, सारे विश्व के कल्याण के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो मैं सब कुछ छोड़ के भी लोगों के कल्याण के लिए मैं कर्म करूंगा। और वो सब में सिया राम जय, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सब में राम है। देखो, इसलिए राम जी की प्रेरणा सब राम जी की इच्छा से हुई। वास्तव में पराशर जी को प्रेरणा दी, ये राम जी की इच्छा है। और राम जी ने जब आना था तभी आना था। आप बहुत सारे लोग आकर के चले गए प्रेरणा, लेकिन आज ही राम जी की इच्छा थी। ये सब राम कीन चाह हो सोई करे, अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहे वही होगा। इसलिए सभी आचार्य जनों का, सभी विद्वजनों का जो आए हैं विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न मंदिरों से, मैं सभी को कोट से वंदन करता हूँ। और आप रुकिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना। मुझे मालूम है धूप है और थोड़ी अव्यवस्था भी हो सकती है, क्योंकि ये एस्टिमेटेड होता है कि कितने गेस्ट होंगे, इस अनएक्सपेक्टेड एंड जितनी व्यवस्था। अगर हम कर्टन या टेंट लगाते तो भगवान राम जी का आपको मूर्ति आप नहीं दिखाई देती। और अभी कुछ मिनटों के बाद हम राम जी की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे, उससे पुष्प वृष्टि होगी। आपसे मेरी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जाना नहीं, थोड़ी देर के राम जी के नाम पर थोड़ी धूप सह लेना। राम जी के रामायण कांड के उत्तर में, रामायण के उत्तर कांड में कहा दयंती नो मानवा, जो राम जी के ऊपर आश्रित हैं उनको सूर्य की किरणें जो दुनिया के पाप हैं, जो अशांति है, उसके ऊपर नहीं व्याप्ति। इसलिए आप थोड़ी देर के लिए शायद पानी, भोजन व्यवस्था, ड्रिंक सब व्यवस्था है, आप सब लेके जाइएगा। लेकिन अब रुकिएगा थोड़ी देर, मेरे बाप प्राश्रद जी दो शब्द कहेंगे। उसका हमारे जो अतिथि, जो डिग्निटी जी हैं सारे, हमारे MP, MPP, मिनिस्टर, so they are coming just 1 minute or we are going to introduction each one, और उसके बाद after we will do inauguration. So please stay. I request, humbly request to each one, everyone, भारतीय संस्कृति के नाते और मेरे प्रार्थना करने से आप रुके रहिए थोड़ी देर। सभी वॉलंटियर सबका मैं हृदय से आभार बैठ। अब प्राश्रद जी जिनके माध्यम से भगवान का इतना बड़ा विग्रह यहाँ विराजमान हो रहा है, तो श्री लाजपत प्राश्रद जी को मैं आमंत्रित करूंगा, वो दो शब्द कह के उसका अगला करें। जय श्री राम। जय श्री राम। दो शब्दों से ज्यादा होगा शास्त्री जी। आप सभी आए हुए यहाँ भाई बहनों, बच्चों और बुजुर्गों को प्रेम और सत्कार के साथ नमस्कार। दिस thing is possible only because Acharya Surinder Sharma Shastri ji accepted my request on my 70th birthday that my family will donate this Lord Rama statue to this temple. It took almost 4 years to complete, but we completed it. My special thanks to the people who have made it happen. The structural engineer, Rajan is here from IBL, my construction worker, the Tyler, my Mexican crew, Angel and Israel, all these people, my electrician, all of them, especially this fellow, a Muslim friend, made this in 8 hours, Jai Shri Ram, this sign. Ramji is symbol of unity. There is inclusiveness, and inclusiveness was promoted by the teaching of Ramji. So we are here. If you look at my politician friends, you know, they represent inclusive spectrum of politician. So we have politicians from every faith coming, and that was the Ram Rajya. That was the philosophy of Lord Ram. When Lord Ram came, there was no religion, no division, no small guy, big guy. There was no caste system. So Ramji came for mankind. Ramji came for human being. So Ramji's value, peace, the fairness, social justice, integrity, loyalty, and obedience. That's what Ramji's teaching is, which applies to every human on earth. So this morning we completed the 3-day process to bring Ramji from heaven to earth. So you're going to see in a short while, Ramji will descend here to bless every one of you and every human on earth. My friends, we Sanatan Dharmi, follower of Vedic culture, commonly known as Hindu, we believe we are born to love other human and serve God. In itself, we believe we are born to love other human. And you know, a flame which is not hot cannot be called fire.
A white powder, if it's not sweet, it cannot be called sugar. Similarly, if human does not love and show affection to the other human, you're not a human. You would be something else. So whether you love every human or your wife, we are born to love every human. That's our faith. We came here with very small amount of money, $6.40 in my pocket 54 years ago. But we came rich, our DNA rich with spiritual knowledge, with Adi Shankaracharya, with Guru Nanak Dev Ji, or Gurbani, or Hamare Ved, or Bhagavad Gita. We came with our DNA full of spiritual knowledge. We brought our spirituality to this nation. The first Indian in 1897 from my state Punjab, Kesar Singh. He came to Canada in 1897 to celebrate Queen's Victoria Diamond Jubilee. He stayed here. From one Punjabi, Kesar Singh, in 1905 we had 4,000. They faced a lot of problems, but they set grounds for us. Now they in the fruit of their hard work, their suffering in Canada in 1904. But now, look, we were striving to have one politician. Look how many we have now. Our own Anita Anand, foreign minister of this great nation. Our own Maninder Sidhu. Look, he is the international trade minister. And my new friend, Shafaqat Ali, president of Treasury Board, man with a bag of money. And I just came to know him last Sunday, and he's so humble. I can't believe his director Muhammad surprised me this morning. He called me, he said, you choose the time, you come to minister's office, we will entertain you in Ottawa. We have such a good people here. The Richie, minister, I'm sorry, I should say honorable to you guys. And then we have our PC, Minister Nina Tangri, and the Andrew Scheer, and the my MP Amarjeet, and I think Geer, and then my very, very friendly Amarjot. So we are here to, my bold, yeah, Geer. So this is a great moment. It's a great day for Mississauga, Canada, and it's a great day for our Prasher family. My nephew, where is he? Sanjay Prasher. He graduated with PhD from American University. First Prasher kid to graduate with a PhD. So we are proud of Sanjay. I don't know where he is. He's here somewhere. So it's a great thing that we are gathered today, and all the DNA we brought from India. Spirituality from Adi Shankaracharya, Guru Nanak Dev Ji, bravery from Dashmesh Pita, Guru Gobind Singh, Char Sahibzade, Maharana Pratap, Jhansi Ki Rani, Shivaji Maratha, Lakshmi Bai. We have all those DNA. We are not supposed to be afraid of anything in Canada. My political friend, they tell me, one of the friend I said I am scared one day. He said, don't tell me that again, that you are scared in Canada. We have nothing to be scared of in Canada. We are brave people. We stand up our dharma. We propagate our dharma here in Canada and all over the world. Now, all those things we brought here. And, I cannot forget, I cannot leave this stage without talking about Canada. This is a great nation. I came with $6.40 in my pocket, and I was able to do this task after 54 years. In 1867, my friends, I'm going to tell you this. In 1867, when our founding fathers sat in one room and carved this great country known as Canada, they set up sound public policy, which were inclusive and friendly to minorities, including our people. So from 1867 to now, starting with Sir John A. Macdonald, first Prime Minister, to current Prime Minister Carney, they all have that in mind in their DNA to produce loving, minority-friendly. A lot of work was done by Jean Augustine on the multiculturalism. So we have great things. Now, one of the greatest Prime Ministers of all time is considered Mr. Trudeau. Yes. Pierre Elliott Trudeau. I'm sorry, messed up name. Pierre Elliott Trudeau. He brought our constitution from England. When he brought our constitution, he gave us Charter of Right and Freedom. My friend, it's that Charter of Right which gives me freedom here to speak today fearlessly. It's that Charter of Right that we have this institution. It's that Charter of Right that we have this statue. It's that Charter of Right
that my next generation will flourish here in Canada. It's that charter of right that you are sitting here all listening to me. And this is a great country. We love this country. When we took the oath of citizenship, we have to remember that. We have to remember when we took the oath of citizenship, we said something that we will be loyal to this country. You know, we love our country, India. India is a great country. Every country, we want to go there, do business. Every citizen of the world want to go there. Look at, you know, we are ahead of most of the other country. 1 billion biometric human database. Nobody has it. 1 billion biometric database. Over 1 million cell phone. No country has it. 250 million middle class. We are generating our own demand. We don't want to be rely on other country. We can feed ourselves. We can generate ourselves. We can generate the economy. We can trigger the economy. But wait. 350 million English speaking youth is our strength of our country. So, you know, we came a long way from 1947 and our country is booming. Our country is 4th biggest economy in the world. We beat England and Japan. India is going to beat soon Germany. We would be third largest economy in the world. And I can guarantee you, in few years, we would be 2nd largest economy in the world. Who doesn't want to do business with India? You know, we have lots of good things going on in both countries. I am thankful to Prime Minister Carney for appointing Anita Anand as Foreign Minister and my dear friend Maninder as International Trade Minister. Can you believe? Young man from roots in Punjab is International Trade Minister. What more we want? What more we want in Canada? You know, sometimes some people, some organizations, some countries say things which we don't like. We have to ignore them. We keep on marching to the higher ground. We keep on marching with Canada to the higher ground. We keep on marching with India to the higher ground. One day we're going to be superpower in the world with Canada, India together. Thank you so much. I love you all. Thank you so much. Go. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. I think I took more time than my MC wanted, but I had to say these things. My MC here. बहुत पराशर जी घर में बहुत ज़्यादा, लेकिन आप खड़े रहिए। पराशर जी के एक बार जोर से ताली बजा दीजिए, क्योंकि he is a backbone, he is a big instrument, and because of him we all are assembling here, because that by his dedication and devotion we feel so proud of him. इसलिए थोड़ा सा हमें इनका भाव सुनना जरूरी है। पराशर जी 1 मिनट के लिए ये आपके लिए पटकर, ये पराशर जी हैं, इनके बिना ये इनकी धर्म पत्नी है। उठाइए कलम तरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायत। और इनके सुपुत्र, इनका परिचय बहुत ही बिल्कुल छुपे रहते हैं, लेकिन श्री रवि जी एवं इनकी धर्म पत्नी श्रीमती ऋचा जी। सर जी 1 मिनट। रमन जी 1 सेकंड। आप सारे पराशर परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रवीण जी कुशाग्र। Ministers and MPs from the Liberal Caucus. We have MP Richie Valdez. She's our MP from Mississauga, Streetsville, the Mandar area. We have Minister Shafkat Ali. From Brampton, we have Minister Maninder Sidhu. He's from Brampton as well. And we have Ikvinder from Mississauga, Malton. So I'm going to quickly pass over the mic. Thank you, Kushagar. Namaste. Jai Shri Ram, everyone. Oh, I love this energy. It's so good to be here in Mississauga, Streetsville. Welcome to the beautiful riding. So honored to have the Hindu Heritage Temple with all of us. A big shout out to the incredible Hindu community here across Mississauga. So honored to be joined with my honorable colleagues as well. This is a momentous occasion to honor the
Bangwen Ram God. This is a very large 51-foot statue here. And I just want to say this is a very important occasion. So honored to be here, and I've got 3 other colleagues who want to say something. Again, congratulations to the whole community. Congratulations! Can we give a round of applause to all the organizers to bring us together today? Thank you so much. नमस्कार जवाब नहीं है नमस्कार नहीं अभी भी मजा नहीं आया 50 कितनी बड़ी ये है नमस्कार there we go my name is Shafqat Ali I'm the member of parliament for Brampton Chinguzi Park it is a great honor to be here आज जो unveiling कर रहे हैं जय श्री राम की मूर्ति की this is amazing to see and that is the beauty of Canada great to be here जैसे लाज प्रसाद साहब ने बहुत कुछ कवर कर दिया जितनी भी बातें मैंने कहनी थी वो कह गए और आप लोगों के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग जो बैठे हैं धूप में आप सबके लिए एक मर्तबा खुल के 2 ताड़ियां बजा दीजिए अरे भैया एक मिनट आप इतने बड़े इवेंट में आए हो 2010 में इस मंदिर की इनॉग्रेशन हुई थी बहुत कम लोग थे आज thousands of लोग हैं ये हिस्ट्री बनने जा रही है लाज प्रसाद साहब ने इतना बड़ा काम किया है और आप लोग धूप में बैठे हैं और उसको हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे I need to hear round of applause with my 1 2 3 go there we go that's what we're talking about thank you so much great to be here और ये कनाडा की ब्यूटी है जैसे राम प्रसाद साहब आए थे $6 के साथ I came with nothing and this country has given me so much from working from odd jobs becoming a president of the Treasury Board of Canada that is the beauty of Canada that's what makes us Canada strong so I'll pass it on अब मेरे पास बहुत सारी बातें करने को सिर्फ आप धूप में नहीं बैठे ये जो स्टेज है ना बहुत गर्म है ये पता नहीं कितनी देर कैसे तकरीर कर गए तो मसलन हम एक ही बोट में सवार हैं तो I'm gonna pass it on to him क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता थैंक यू सो मच Jai Shri Ram. Good afternoon, everyone. Bonjour et tous. I want to say thank you to the organizers, of course, the community here. I want to thank the Sharma family, but of course, I can't forget Mr. Laj Prasher and his family for their generosity. Really coming here together with the community and putting up Lord Ramaji's statue here. I think it's the largest murti in North America, and that's something to be very proud of. And this is what it means when community comes together to build big things together. And speaking of building big things, Prime Minister Carney and our government is focused on building big things for Canada, for our communities across the country. Just 5 weeks ago, my colleagues here were in Parliament. We passed legislation, the One Canadian Economy Act. That means we're going to be building big national projects across the country. Normally it takes 5, 10, 15 years to get permitting through. We're going to get that done in 2 years. That means hundreds of thousands of jobs for your children, for young Canadians in this crowd. Let's give them a round of applause, please. So for the Daddis and the Daddajis here with your young children, the young Canadians, look at becoming engineers, architects. We're going to need skilled trades across Canada to build these big projects, and together we're going to build Canada strong. Thanks again for having me here, and a big congratulations. Hi everyone, how's everyone doing? Good. आप सबको नमस्कार. हमारा नाम है Kwinder Singh Gahir. I'm the MP for the neighboring riding of Mississauga Malton. I wanted to congratulate the Hindu Heritage Center and the local community for the inauguration of Shri Ramji's Murti. So I was actually born in Punjab. Hamara janam India mein hua tha. And I came to Canada when I was very young. So I actually remember going through villages within India, going through towns and seeing murtis of Shri Ram. And so this is bringing back a lot of childhood memories. So once again, congratulations to the local community. Congratulations to Canada and diversity that we hold so dearly. Congratulations to the Prasher family for their donations. And thank you to all the volunteers. Jai Shri Ram. Thank you so much. Few words. तेरे झोपड़े में
आज आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी से भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। So I would like, the politicians have taken up my time, so I got to be very short because they talk too long. I would like to say what a great dharma we have. Hinduism is one of the greatest philosophical dharma in the world. I make no apologies for this. And 40 years ago we could not walk down the street with our sari, but now today we can walk with it. It is because our great dharma. I would like to congratulate Raj Prashar, who has done a great job here today. So to all the people who are here, Dr. Gupta is here also with us. I would like to say a big warm welcome to all of you. And to Raj Ji, they did not do this when the politicians were speaking, but when I was speaking, they're doing that. So I would like to congratulate Raj Ji for this great, wonderful work. He has put a lot of hard work. I know it. I know it. We used to meet practically every day. And he has put a lot of hard work to do this. Let's give him a big round of applause, please. Raj Prashar Maharaj ki. Next, I'd like to invite Kapil Dhatji. Kapil Dhatji is the Consul General of India, Toronto. So honored to have Kapil Dhatji here. He is a very accomplished IAF officer, very knowledgeable, and it's great to have him here with us. थैंक यू कुशाग्र। भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए यहाँ पे और भारत का कॉन्सुल जनरल होते हुए आज मेरे लिए गर्व का दिन है, और गर्व से ज़्यादा एक इमोशनल डे भी है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे बहुत सारे एल्डर से बात करता हूँ, और जब वो 50-60 साल पहले आए थे तो शायद 1 या 2 मंदिर थे जहाँ पूजा कर सकते थे, और आज उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि 51 फुट की प्रतिमा आज हमारे GTA में रहेगी। जय श्री राम। ये मूर्ति 2 चीज़ों की मार्गदर्शक है। एक तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जो कि अपनी राइटियसनेस के लिए और वर्च्यूज के लिए जाने जाते हैं। आप भारत के बाहर भारतीय कम्युनिटी में हमारा एक तरह से गर्व का महत्व है, और जब भी आपको लगता है कि आपके वैल्यूज़ में या कोई कन्फ्यूजन है तो हम सब अपने आप ही श्री राम के मर्यादा को याद करते हैं। तो ये मूर्ति हमारे कम्युनिटी की एक गर्व की बात होगी, और उसके साथ ही टू ऑल द पीपल who challenge you, the people who say different things about the community, this will be a testament to tell them what the community stands for. It is for the righteousness, it is for the virtues, and it is for the memories of Lord Sri Ram. Thank you so much for inviting me here, and wish you all the best. Thank you. जय श्री राम। And many thanks to Raj Prashar ji for pulling this together, and the family. Thank you. So we're aiming to do the inauguration within 5-10 minutes, so please stay with us. I'd like to ask Councillor Brad Butt. Councillor Brad Butt is the biggest reason why the whole Rath Yatra happened today. So I mentioned PO Police, the help from them, but Councillor Butt was the first person we met in order to organize the event, and without the permits from the city, the event would not have happened. Brad Butt is our councillor for Ward 11. He's a great supporter of the Hindu community here. He's helped the organization a lot. And he's our former MP, so he has a long relation with the community here. So Brad, please say a few words. Thank you very much. Namaste. Good afternoon, everybody. I want to bring you greetings on behalf of Mayor Carolyn Parrish and all of the members of the Mississauga City Council for this very auspicious occasion today. And I'm particularly delighted that we have the Hindu Heritage Center and this beautiful new statue, which we'll unveil in a couple of minutes, right here in the heart of Streetsville in my ward. So I'm so delighted to join with you today in this wonderful celebration. Jai Shri Ram!
Thank you. Next, I want to invite the leader of the opposition, Mr. Honorable Andrew Scheer, as well as MP Amarjeet Ji. So, few words. Namaste, everyone. Thank you so much for having me here. I have a very quick question. How many people here moved to Canada because of the weather? Not too many hands going up. I live in Saskatchewan, and I can tell you nobody ever came to Saskatchewan in January and said, that's where I want to be. But instead, people come to Canada because of the freedom that we offer. That is why Canada is so diverse, because of our commitment to freedom. And I know, Balazs Prashar, thank you so much for all your hard work. You talked a little bit about that history of freedom. Well, even before the Charter, Conservative Prime Minister John Diefenbaker brought in the Canadian Bill of Rights. And he said then, I am Canadian, a free Canadian, free to speak without fear, free to worship God in my own way, free to stand for what I think right, free to oppose what I believe wrong, free to choose those who govern my country. This heritage of freedom I pledge to uphold for myself and all mankind. That is that wonderful Canadian tradition of freedom. I'm here, before I pass it on to my colleague, I just want to bring greetings from Conservative leader Pierre Poilievre. Pierre is fighting hard to restore that promise of Canada. We know there are many issues here after 10 years of this government with housing, with crime. We want to make those streets safe. Imagine how much stronger Canada could be if those big national projects were built 10 years ago. So Conservatives are going to keep fighting for you, keep fighting for your religious freedom, the freedom to pass on your heritage and your culture. And I just want to wish all of you the very best on this auspicious day as we unveil this statue. Now I'll hand it over to my colleague. जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। अगर राम जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है और राम जी का उद्घोष ना हो तो ये तो संभव ही नहीं है। मैं हिंदू हेरिटेज टेम्पल को बहुत बहुत बधाई देता हूं दिल से कि उन्होंने ये जो भव्य मूर्ति का अनावरण का दिन के लिए हिंदू हेरिटेज को चुना है। खास करके मैं लाज पाराशर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हो सकता है ये कोई और जगह भी चुन सकते थे मूर्ति को स्थापित करने के लिए, पर इन्होंने मिसिसागा का जो ये हमारा पील रीजन चुना, इसके लिए भी मैं लाज पाराशर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लाज पाराशर जी हमेशा कम्युनिटी के साथ रहे हैं। मैं अपने आप को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम अमरजीत गिल है। मैं ब्रैम्पटन वेस्ट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से, और मुझे कहते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इंदौर के नगर से, इंदौर शहर से आता हूँ जहाँ पर महाकाल जहाँ से मैंने महाकाल जाकर काफी बार दर्शन किए हैं। उनका आशीर्वाद है, उनका प्रताप है कि आज हम सब लोग यहाँ पर फल फूल रहे हैं। एक बार फिर मैं मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड एंड्रू शीयर आए हुए हैं। इन्होंने हमारी पार्टी का भी नेतृत्व किया है। He was the leader of the Conservative Party of Canada. Now he's the House Leader of our Conservative Party of Canada, doing wonderful job. And I would like to thank our leader Pierre Poilievre, who is working hard. As Andrew said, he is working hard to restore the Canadian promise कि हम लोग जो हैं जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर एक अच्छा घर, अच्छी जॉब, अच्छा पेचेक, सेफ स्ट्रीट्स ला सकें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। ये एक अद्भुत ओकेजन हो रहा है यहाँ पर। जैसा कि हमने सुना, लाज पाराशर जी ने भी कहा कि कैनेडियन हिस्ट्री में ये एक अद्भुत दिन के रूप में जाना जाएगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राम जी के जहां पर पेड़ स्थापित हो गए वो धरती तो धन्य हो ही जाती है। मेरी तरफ से हिंदू हेरिटेज टेम्पल को, लाज पाराशर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप श्रद्धालुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, राम जी का मूर्ति अनावरण के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जहाँ पर रामलला की कृपा हो जाती है वहाँ पर सारे काम अवश्य रूप सफल होने लग जाते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो उद्घोष किया है यहाँ पर आने के बाद,
वो मैंने जय जय सिया राम का किया था। और मेरा मकसद है उस पे कि मैं ये सब लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर काफी लोग आए जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए जय जय सिया राम कहता हूँ कि सिया का मतलब है माता सीता। माता सीता के बिना राम जी अधूरे हैं और राम जी के बिना माता सीता अधूरी है। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी उद्घोष के साथ मैं आप सभी को बधाई धन्यवाद देता हूँ। जय जय सिया राम। Congratulations to everyone at the Hindu Heritage Center. Thank you to all the people who have come and helped enrich Canada's diversity with your faith and your culture. Thanks very much. Andrew is known as smiling politician. He always smiles, his face is smiling. Thank you so much. So last but not least, I'd like to invite all of our MPPs, our Minister Tangri, MPP Deepak Anand, MPP Sylvia, and MPP Amarjot Sandhu. So please quickly 30 seconds. सबको प्रणाम। थैंक यू कुशागर जी। जय श्री राम। बड़े अच्छे लग रहे हैं आप सबको देखकर। The view from here is absolutely stunning and beautiful, and it's because of each and every one of you. I just wanted today, my name is Nina Tangri. I'm the MPP of this beautiful riding of Mississauga Streetsville and Ontario's Associate Minister of Small Business. But today I stand before you as a very proud Hindu. And not only that, I'm a proud Canadian, because today we are seeing what it is to be a real Canadian. The ability to be here to celebrate our heritage, our religion, our culture with the installation of this stunning, beautiful 51-foot Ram Bhagwan Murti. It is so heartwarming. I can't tell you the feelings I'm having right now about being able to do this with each and every one of you. Each of us bring greetings from Premier Doug Ford. He was unable to join us today, but I will read those greetings. And it really is so wonderful to see each and every one of you. So the unveiling of Bhagwan Ram Statue Hindu Heritage Center. I would like to extend my warm greetings to everyone taking part in the unveiling of the Bhagwan Ram statue in Mississauga. Among Ontario's strengths are its rich cultural and religious diversity. It is home to a vibrant Hindu community whose contributions have made our province a better place. The Hindu faith has much to offer those who are aspiring to lead positive and productive lives through its teachings about purposeful work and a sense of service to humanity. Many thanks to the Hindu Heritage Center for your dedication to building a strong Hindu community with this great province. To everyone, may you continue to find strength and connection in your shared faith and traditions. My best wishes for a meaningful ceremony. Signed, Doug Ford, Premier of Ontario. Special wishes from him to each and every one of you today. But with that, I just wanted to say, my husband and I, our entire family, we've lived in this riding our entire 41 years. And to be able to be part and to call the Hindu Heritage Center my home is so warming to see all of you. But more than that, I just wanted to say each one of my colleagues here has taken the time to come out. It's so wonderful to see dignitaries from so many levels of government. And just a very special thank you to my friend, Councillor Brad Butt, for helping make this happen here by closing the road, Mississauga Road, which is very, very difficult. With that, I'd like to pass it on to my amazing colleague, the MPP for Mississauga East, Cooksville, Sylvia Guattieri. Thank you so much, Nina. I just want to tell you that Nina and I have been friends. You know how she says she's been here for 41 years? Well, we've been friends for 30 of those 41 years. I call her a friend and a colleague and a wonderful MPP for this riding in Streetsville. Thank you so much for inviting me here today. This is the first time I come to this type of celebration. And of course, it's also the first time because you have the unveiling of this fabulous, fabulous statue. The man, the Lord Ram, who is not only a mentor, but a man of faith, a man of humility and compassion. No ego. And that's what he gives to us and to especially you. I thank you for being who you are. I tell you, your traditions may be different than mine, but our values are the same. The values of family, faith, friendship,
and celebration. So let's celebrate Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. My name is Amarjot Sandhu. It is such an honor for me to be here this afternoon. And first and foremost, I would like to thank Hindu Heritage Center for this event today. Ram Ji ki Murti ka aaj kar rahe hain unveiling, and also Ram Rath Yatra. So first and foremost, I would like to thank the organizer, Shastri Ji, the entire team जो इसके पीछे है. सभी को बहुत बहुत बधाई कि सभी ने इतनी मेहनत करके इस स्टैचू को, मूर्ति को इधर स्थापित किया है. हमेशा ही, और लाज प्राशर फैमिली को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, 15 साल हो गए मुझे. वेरी डाउन टू अर्थ फैमिली, हमेशा कम्युनिटी के साथ करते हैं और ऑलवेज गिव बैक टू द कम्युनिटी. सो एक बार इनके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू लाज प्राशर फैमिली. राम जी ने हमेशा हमें टीचेस अस द वैल्यू ऑफ ट्रुथ, सैक्रिफाइस, लॉयल्टी, ह्यूमिलिटी, जस्टिस. एंड ये मूर्ति हमें हमेशा रिमाइंड कराएगी उनकी टाइमलेस टीचिंग्स की और हमेशा द स्ट्रेंथ ऑफ फेथ इन आवर लाइफ्स. So thank you सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई. Thank you so much for having me. हरिओम. मेरा नाम दीपक आनंद है. तो मैं यहाँ बैठा ये सोच रहा था, अगर भगवान सबके अंदर है तो हमें मूर्ति की क्या जरूरत है. The reason we need the statue is because जो हमारे बच्चे हैं या जो हिंदू नहीं हैं, जब कभी भी मंदिर के पास से निकलेंगे, इतनी बड़ी मूर्ति को देखेंगे तो ऑब्वियसली पूछेंगे who is he. And that is the strength of this murti, because Ramji is the embodiment of our religion. एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए. तो लाज अंकल, हिंदू हेरिटेज और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस मूर्ति की वजह से ही बहुत सारे लोगों को पता लगेगा कि अच्छे जीवन जीने के लिए क्या चाहिए. So thank you again. जय श्री राम. Thank you to all of our MPPs. It's a pleasure to have each and every one of you. I think they have a small gift. Next, I'm going to have Pandit Roopnath Sharma ji. He is the founder and president of Mississauga's Ram Mandir, as well as the president of the Hindu Federation. So, Pandit ji, just a few more minutes and then quick words. Hello. Panditji, there is something I want to say about Roopnath Sharma ji. There is something you people don't know, which I know. Panditji is always building the community. He's always unifier. He doesn't come out in the limelight, but the amount of work he does behind the scene, I know that. And we are thankful to you, Roopnath ji, for this, your dedication to the community and Hindu cause. Now, after this, my family is also donating 25 feet Radha Krishna at Vishnu Temple. And our last of the year would be our Ram Lala to Ram Mandir. We are going to donate Ram Lala Ayodhya Wale 87 inch के indoor. तो वो हम करेंगे प्राण प्रतिष्ठा अक्टूबर 13 को. मूर्ति आज मंडे को चल रही है. तो आप सबको निमंत्रण है कि आप अक्टूबर 13 डेट फ्री रखना. थैंक्स गिविंग का छुट्टी है, तो वो हम राम मंदिर में पंडित जी के साथ प्रतिष्ठा करेंगे. थैंक यू. पंडित जी बोलो. सभी लोग जय श्री राम. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः. बोलो. हमारो धन राम श्री राम हमारो धन राम श्री तार्या श्री राम. हमारो धन राम श्री राम हमारो धन राम श्री राम हमारो धन राम श्री राम. जय जय श्री राम. बोलो जय जय. हाथ उठाइए. जय जय श्री राम. बोलो जय जय श्री राम. श्यामपति रामचंद्र भगवान की. Sundar Shastri ji and his working committee of the Hindu Heritage Center have made a milestone event by directing and the establishment of this Jai Sri Ram Bhagwan Murti.
And through the kindness of the Prashar family, let's give them another big round of applause, please, for all of their generosity. Hinduism is always vibrant, always alive, but it's only alive and vibrant through the hearts of its devotees. We who believe in this tradition of Satya Sanatan Dharma will be proud today and share this with all of our children. That yes, in Canada, it doesn't matter if you're here 5 years or 50 years, Canada is still a wonderful place for all people, especially we, the newcomers of this country. In a few minutes, we shall be doing the unveiling of this great Smriti, and I want to ask everyone, Man Shanti, 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 Dolwala. I want the people with the dole to give me a nice, loud rhythm of dole, and everybody be quiet. Bolo, Dolwala. 1, 2, 3. Tima. Talia. Janda utho. Janda utho. Jai Jai Sri Ram. Jai Jai Sri Ram. Jai Jai Sri Ram. Jayapati Ramachandra Bhagwan ki Jai. Thank you so much, Panditji. So just last quickly, I'm going to ask Nareshi to say a few words. 10 seconds. फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू हेरिटेज सेंटर आदरणीय पंडित जी, लाज परासर जी, सबको धन्यवाद करता हूँ. फ्रॉम कैनेडा हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स वी हैव ऑल डायरेक्टर्स एंड अक्रॉस द कैनेडा हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स टीम की तरफ से आप सबको धन्यवाद. आपको बताना चाहूँगा कि बहुत लोग कहते हैं, आई एम फिनिश विद इन अ हाफ मिनट, बहुत लोग कहते हैं कि द हिंदूज आर लाइक फंडामेंटली यूनाइटेड but organized divide. But here you see the way the 16 linguistic group are here today. Thousands of people are Hindu community and across Canada, they are here. So for Bhagwan Ramji's Murti inauguration, so we are not taking long time, and I again congratulate the Hindu Heritage Center and all attendees today. Thank you very much. जय श्री राम. टाइम इज ओवर. अब टाइम आ गया भगवान राम जी के उद्घाटन का. डॉक्टर योगी राज जी, परम श्रद्धेय स्वामी जी, जो संत महात्मा सब यहीं आ जाओ पर स्टेज पर. और प्राशर जी, हमारे डॉक्टर श्री स्टीव गुप्ता जी, पता नहीं कहा, मैं उनको बुला रहा था 1 मिनट के लिए. और सभी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं सबका एक बार पुनः बहुत धन्यवाद. मैं पहले भी एक बार कर चुका हूँ हिंदू हेरिटेज सेंटर को, एक बार पुनः सभी का, क्योंकि नाम सबके ले पाने और सबका. डॉक्टर धीरेन्द्र त्रिपाठी जी, गौरी शंकर, आप सभी आ जाएं 1 मिनट के लिए. जितने आचार्य जन सभी आ जाएं 1 मिनट के लिए. एक मंत्र के साथ हम भगवान का उसके साथ ही उद्घाटन कर रहे हैं. ऊपर से पुष्प वृष्टि होगी, आप सब खड़े हो जाएंगे जब भी बोले. अभी बैठे नहीं, 1 मिनट और. They are going to prepare. We have 45 minutes garland, 45 feet garland. We are going to offer there. Stay there. इसीलिए आपको रुका. आपकी सब तपस्या जो अभी फलीभूत होने जा रही है. चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए. कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी.
क्या है कौशल्या के मन से पूछो द्वार मेरे एक मिनट मधुसूदन जी, एक मिनट। प्रासरी हो गया सबका, क्योंकि मंत्र बोल के सब राम जी की स्तुति और आरती। अब प्रवीण जी, ओपनिंग करनी है, छित्ती करो तो टाइम हो गया। जाइए 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 जाइए। जय श्री राम। पंडित जी ने इतना काम किया, इतना दौड़ धूप की, और ये छोटा सा हम राम जी के 2 फीट के छोटे स्टैचू इनके लिए बनाए हैं और ये घर लेकर जाएंगे। मेरी प्रार्थना है कुशागर की मदद को, मम को, कि ये घर लेकर जाएं अपने लिए, ये आपके लिए। आप ऊपर आ जाते तो अच्छा होता। थैंक यू। आ गए, थैंक यू। ये पराशर जी के लिए आप सबों की और जितने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उन सबों की ओर से एक प्रशस्ति पत्र, छोटा शुभकामनाएं के लिए, जिन्होंने महत् कार्य किया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। कुशागर एक मिनट पढ़। अभी टाइम आ गया, सभी एक तो आपसे प्रार्थना है, भगदड़ नहीं मचाइएगा। पुष्प वृष्टि ऊपर से होगी, कैसे होगी आप दर्शन करें, वहां तक हम पहुंच नहीं पाए, नहीं हम आप सबों को पुष्प देते। उसके बाद फिर आप यहाँ जिनको प्रणाम करने हैं प्रणाम से, प्रदक्षिणा भी बनाई है, प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं बाद में, टाइम आपका है। बहुत अच्छा दिन है, गर्मियों के दिन कभी कभी मिलते हैं, अभी बस अगले महीने आप ढूंढेंगे, ऐसी गर्मी तो मिलेगी नहीं कनाडा में, इसलिए यू ऑल आर इंडिया, और इसलिए आप सबको पता है यू आर एंजॉइंग। तो अभी भगवान राम जी का अर्चा विग्रह जो 51 फीट का, जो ऐतिहासिक पूजा बहुत बार होगी, सत्संग बहुत बार होगा, लोगों का मिलना जुलना बहुत बार का जीवन रहा, लेकिन भगवान जी का रवि हम सभी के जीवन का एक अद्वितीय क्षण है, इसको अनुभव करें। और अब आई थिंक हम बिल्कुल तैयार हैं, सब खड़े हो जाइए भगवान राम जी के स्वागत के लिए, और राम घर आएंगे। चल खट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज तुम्हें दो पानी से, बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं।
सभी अपने अपने अपनी वाणी को पावन, हृदय को पावन करने के लिए श्री राम जी की स्तुति करेंगे। उसके बाद हमारे तिवारी जी हैं और राम जी के भजन गाएंगे जो पटियाला से आए हैं। उसके बाद कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन ढोल भी बजेगा सब। तो सभी श्री राम जी की स्तुति सभी अपने अपने स्थान से पराशर जी आरती करें। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज जन कंज मुख कर कंज पद कंडारुण कंधर पय गणित अमित छवि नव नील तीरथ अगमित मानहु गणित रुचि सुचि नामी जनक सुदावर भज दानव रघुनंद मानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंद सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषण आजानुभुज सरिचापथ संग्राम जित कर दूषण इति वदति तुलसीदास सुंदर शेष मुनि मन मम हृदय कंज निवास गुरु कामानि कल दल कंज श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, सब देवों की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सदगुरुदेव की, आज के आनंद की, अयोध्या नगरी की, आप सभी श्रद्धालु जनों की, भारत माता की, कनाडा देश की भगवान के जो मूर्ति है उसके चारों तरफ क्या क्या लिखा है आप टाइम लेके आइएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और अभी जो रुक सकते रुकिएगा। खाना पीना बिना खाए पे कोई नहीं जाएगा। कोल्ड ड्रिंक भी है उधर, जलेबी और पिज्जा एक्स्ट्रा जो भी आइसक्रीम सबको